you. I have already explained you the whole poem. Now we will discuss some important points in this poem. So the first is theme. So what is the theme of the poem Photograph? So our days captured in still pictures have the power to once again evoke smiles and tears of the past. This is the power of a photograph. A search for the lost happiness in the photographs is uplifting and saddening both at the same time. So जो लॉस्ट हैप्पीनेस जो फोटोग्राफ्स में कहीं खो गई है वो दोनों चीज़ अपलिफ्ट कर रही है. हैप्पीनेस उन पास्ट मेमोरीज़ की और सैडनेस क्योंकि हर मदर इज़ नॉट अलाइव who would not want to relieve the days when the friends and families were together and days passed by without a worry. But after the momentary happiness, the present only pinches more as the void after their departure makes itself left felt harder. So जिस तरीके से वही पास्ट मेमोरीज आज प्रेजेंट पे आके पिंच कर रही हैं, वैसे ही तरीके से void after their departure makes itself felt harder. तो जब कोई बहुत दिन बाद आता है, जब वो डिपार्ट करता है तो उतना ही ज़्यादा दर्द होता है. सो इट इज़ अ नॉर्मल फ्रेज. ओके, सो द पोएट हेयर प्रेजेंट अ poignant scene of the rush of memories felt when she looks at her mother's smiling picture from before she was born. So यहाँ पे भी प्रेजेंट में जो ये सीन है वो बहुत सारे रश ऑफ इमोशंस हैं, रश ऑफ मेमोरीज़ हैं जो पोएट एक्सपीरियंस करती है जब वो अपनी एक मदर की स्माइलिंग पिक्चर देखती है. ओके, द स्माइल वॉज हार्टनिंग but poles apart from the remorse and expression later in the life. If not in reality, the poet got the warm comfort of her smile through the photograph. So poet को एक warm comfort मिलता है उस photograph को देखकर, एक smile को देखकर. Through the poem we realize the essential worth of a picture and how memories of the past prove a fuel for future life. तो ये ही इसकी थीम है. बेसिक जो मेन थीम है इस पोएम की वो ये है कि कैसे एक पिक्चर्स इतनी एसेंशियल होती हैं, कैसे मेमोरीज आर सो एसेंशियल एंड अ पिक्चर एट द सेम टाइम कैन गिव अ सैडनेस एंड अ हैप्पीनेस एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम. वो दोनों दे सकता है हमें. This is the main theme, and it also and how the memories of the past prove a fuel for life, future life. और कैसे past की memories आगे अपनी future life को बढ़ाने के लिए एक fuel की तरह काम करता है. This is the theme of the poem Photograph. Now the title, कि how much this title is appropriate is very important, right? So the Photograph is a worthy title as it provides the tangible presentation of the past that the narrator does not have access to. So ये जो पूरा फोटोग्राफ का टाइटल है वो बहुत वर्दी इनफ है, बहुत एप्रोप्रिएट है. क्यों? क्योंकि वो जो पूरी पोएम में एक पास्ट की मेमोरी का रिप्रेजेंटेशन ही तो किया है नरेटर ने और पोएट ने, जो वो इतने सालों पुरानी बात जो वो आज देख रही हो उस फोटो से उसको रिकॉल कर पा रही है. हर मदर, a girl of around 12 years, is captured in this photo wading means walking in the sea with her younger sisters as she studies the photograph with her daughter. So पहले के टाइम पे it was written I think after 20 or 23 years old. Now the mother and the daughter were recalling the past time. That is the reason जो पोएट को अपनी सारी मदर की मेमोरीज और सारी उस पिक्चर के बिहाइंड की स्टोरी सब पता हुई हैं, सारी पता है उन्हें. सो एज शी स्टडीज़ द फोटोग्राफ विद हर डॉटर इट ऑलवेज ब्रिंग्स हर जॉय. तो वही फ़ोटो एक टाइम पर वो जॉय ला रही थी, वो हैप्पीनेस ला रही थी. दिस रिमेम्बरेंस ऑफ द पास्ट वॉज ब्रिंगिंग द हैप्पीनेस टू बोथ ऑफ देम. ओके, शी टेक्स जॉय इन दिस इमेज ऑफ हर हैप्पी चाइल्डहुड. उस हैप्पी चाइल्डहुड को रिमेंबर करते टाइम शी इज़ हैविंग जॉय
in her heart, and even in the silly ways her parents dressed them together, और even जो silly ways में जिस तरीके से उन्हें ड्रेस किया जाता था. But after a decade, however, by looking at this photograph, she can both remember her mother's past and more importantly hear her laughter. But कुछ decade के बाद जब पोएट अकेले इन फोटोज़ को देख रही है, when her mother is not alive, when she is not there, तब she could remember two things, अपने मदर का पास्ट, और वो she could even hear अपनी मदर की laughter. In her loss, like silent silences, both the photograph now brings happier memories to the narrator, just as it did for her mother, by providing a window to a happier time. So अब now इस टाइम पर नरेटर को दो चीज़ों का एक्सपीरियंस हो रहा है. वन, शी इज़ मिसिंग हर मदर, शी इज़ मिसिंग हर मदर्स लाफ्टर, is the sadness which she is experiencing, and one is a happy time by recalling her mother's childhood, by recalling her mother's laughter. She had a mixed kind of emotion in her heart of sadness, of grief, and of happiness. So these are the two things which got mixed in it, and that is what is explained in the whole poem, which is giving an appropriate title, the photograph, to the poem. Okay, so it was a very short video. I want you to go through this. I've explained each and every point that is important in this poem. I want you to go through the videos and the explanation, and if you have any doubt you can ask me. Thank you.